Everyone, welcome back to my channel. So, does anyone of you know that I'm also a BlackPink? I am a Blink and I'm a great fan of all the four members. But Jennie hits different every single time she dresses up. I love their many looks, but this look was just strike to me like a I don't know heart attack. I needed to do this, तो आज हम ये मेकअप लुक कर रहे हैं. तो सबसे पहले I have washed my face and I'm using a cream which you have seen in a while, I guess, because this is a brightening cream but it lightens your face a little, obviously temporarily, so you can do your makeup on it in a brighter face. Then I'm using a primer from K Beauty. ये कटरीना कैफ की लाइन का प्राइमर है और पीच शेड है इसका, कलर करेक्टिंग प्राइमर. इसके बाद माय फेवरेट फाउंडेशन स्विस ब्यूटी, आई एम यूजिंग दैट और आई एम यूजिंग ए ब्रश टू ब्लेंड इट ऑल ओवर माय फेस. सो व्हेनेवर यूजिंग अ ब्रश टू पेंट योर फेस, ऑलवेज यूज़ अ सॉफ्ट वन, क्योंकि हार्ड जो होते हैं वो एक्सफोलिएशन जैसे स्ट्राइक्स कर देता है फेस में, सो दैट विल नॉट लुक. इसके बाद आई एम जस्ट यूजिंग माई कंसीलर विच इज़ मेबलिन. तो आई एम यूजिंग दिस कंसीलर क्योंकि इसका कवरेज काफ़ी मैट है और इफ़ यू यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ इट गोज़ लॉन्ग वे. तो आई हैव chosen a really light look today क्योंकि Jennie Kim doesn't look like she wears a lot of makeup at all. So we will also concentrate on a really dewy look. इसके अलावा मैं यहाँ पे वाइट टोन का पाउडर ले रही हूँ और अपने पूरे फेस को अच्छे से पाउडर कर रही हूँ बिकॉज वी नीड टू सेट ऑल्सो, क्योंकि आई एम सिटिंग इन द सन, सो आई एम स्वेटिंग लाइक हेल, बट नन ऑफ इट कम्स इन माई फेस जस्ट बिकॉज ये लूज पाउडर सेट. आई एम यूजिंग दिस पीच पैलेट आई शेडो और उसमें जैसा कि मैंने दिखाया, पहला जो कलर है वो ऑल ओवर आईज जाएगा, दूसरा कलर सिर्फ क्रीज में जाएगा और लास्ट ब्राउन शेड विल बी इन द आई लिड्स ओनली. तो इसके बाद हम स्ट्राइक करेंगे आई लाइनर, ये कैट लाइनर ऑब्वियसली. इसके बाद हम स्ट्राइक करेंगे आई लैश आपके आउटर हाफ में फोकस्ड होना चाहिए बिकॉज वी हैव डन अ कैट आई लाइन. तो आप अगर पूरे आईलिड्स पर वो फोकस करोगे तो डैट विल नॉट लुक. ऑल्सो आप आई लैश अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले एक पॉइंट को उसको टच करो, when it will stick then stick the other one. एक बार में पूरा स्टिक नहीं होता है. और also wait for 5 to 10 seconds before applying. Also I have used a pink shade from my eyeshadow और all over painted on my cheeks. और इसके बाद I am using a contour and I always contour on my nose like a C at first, then on my nose nostrils. If you do a long line in your nose to contour it, you are doing it all wrong and it will look hell ugly. इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट टच ऑन योर नोज़, जहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद जहाँ पे एंड होता है, दैट्स इट. आप अगर ऑल ओवर नोज़ कॉन्टूर करते हैं सो दैट इज़ नॉट गुड. सून आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन कॉन्टूरिंग एज वेल, सो लुक एट दैट because that will help you a lot on getting a nice and cute contour. After that I'm using my contour powder or I'm looking for a really defined jawline because her jawline is really defined and perfectly small cute face. So I'm just cutting on my jaw whatever the skin I don't need. So just use the contour and just cut the places. It is not you should not apply the contour under the jaw because that really defines a heavy jawline like a boy. So don't do that and go over your jaw क्योंकि वही एक अच्छा जॉ लाइन डिफाइन करता है. तो इसके बाद हम जो लिपस्टिक पे फोकस करेंगे. आई एम यूजिंग अ पिंक लिप लाइनर एंड दिस इज़ फ्रॉम मार्स. तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ रियली नेचुरल लिप्स. उनके आई थिंक जेनी के लिप्स ओवर पावर टोटली नहीं है, हमेशा इट लुक्स क्यूट एंड नेचुरल इन हर नेचुरल लिप शेप. और लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग 2 लिपस्टिक्स विच इज़ वन हुडा ब्यूटी स्ट्रेंथ सेटर और ये नायका का मैट लिपस्टिक रेंज है इन द शेड 04. और यही दोनों आई एम अप्लाइंग. हुडा ब्यूटी मैं लिप्स के अंदर कॉन्सेंट्रेट करूँगी और जो बाकी का लिप्स है उसको हम 04 से कवर करेंगे. और दोनों ही लगाने के बाद हम अच्छे से इसको अपने फिंगर से ब्लेंड करेंगे फॉर नेचुरल लुक. Whenever you think that the lipstick is too overpowering, just use your finger because that brings much more better
than any sponge or anything. Also for her clothes, I have just tried to do it with whatever I had, and I pretty much liked it. I have done the hairstyle. What can I do? So yeah, I have tried really hard. So this is my completed look. Please watch and give me comments how it has been turned. Now obviously I'm not Jennie, so I will don't look like her because I am also not transforming into her. बस हम उनसे कुछ जो है फैशन पॉइंट्स ले रहे हैं and this is how I look. I hope you liked my inspired look, and if you did, please don't forget to comment below about this look. Also subscribe to my channel because we need to go somewhere, and yeah, thank you so much for watching. Bye.